So we have seen that what is nucleotides, type of sugar present in the DNA, RNA. Then we have seen the different bases, structure of DNA. Central dogma of life is nothing but the DNA will be copied. That is known as a replication. From DNA, RNA will be synthesized, known as a transcription. And from RNA, there will be protein synthesis, that is known as a translation. That is a central dogma of life. We also seen we also seen these types of DNA, types of RNA. So we'll continue from this point. We have seen different nucleotide bases, nitrogenous bases like purines, pyrimidines, okay, adenine, guanine, thymine, cytosine, uracil. So adenine, guanine, that is nothing but the purines. Pyrimidines are nothing but the uracil, thymine, and cytosine. That individual purines and pyrimidines, they have their own metabolism. So every metabolism of purine and pyrimidine हर एक का अलग अलग होता है. जैसे थाइमिन का मेटाबॉलिज्म अलग होगा, एडेनिन का अलग है, साइटोसिन का अलग है, यूरासिल का अलग है. So all the metabolism is not important. All the metabolism of individual nucleotides are not important. But basically there is one known as a there is one disease known as a gout or arthritis or gouty arthritis. So that is based upon the metabolism of purines. If there is a increased metabolism of purines, so there is a formation of uric acid. So for that you should know this metabolism. That's why I would like to quickly revise it for you. So purine, adenine monophosphate or adenosine monophosphate, that is a kind of purine. It is a purine nitrogenous base. Okay, we have seen that your nucleoside is nothing but the nitrogenous base plus pentose sugar. Now nucleotide is nothing but the nitrogenous base plus pentose sugar plus phosphate. ये तीनों जब आते हैं तो टाइड बनता है, और साइड कब बनता है, दो मिलते थे. तो दो कौन, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, that is the side. Nitrogenous base plus sugar plus phosphate, that is tide. Okay, so adenosine monophosphate, that is a nucleotide. Okay, it is deaminated. There will be deamination of this nucleotide. You will get a inosine monophosphate or inosine monophosphate. Again, removal of phosphate group, you will get inosine. Upon sequential removal of again phosphate, you will get a hypoxanthine. Now this hypoxanthine is very important. Okay, so increased level of this hypoxanthine causes the increase in the uric acid formation in the body. So this hypoxanthine is oxidized to a xanthine molecule. hypoxanthine का oxidation होगा xanthine में by xanthine oxidase. ये enzyme होगा. Now xanthine again is taken up by same enzyme, xanthine oxidase. Xanthine oxidase will convert xanthine into uric acid and increase the uric acid level in the body. So अगर uric acid का level body में increase हो गया, so what will happen? This uric acid will form a salt with your calcium, magnesium, and other cations like sodium, calcium, and so sodium urate, calcium urate, okay, potassium urate. So uric acid, increased the uric acid in the body will form complexes or will form a salt with the cations in the body, and that salt get deposited or that crystal get deposited in your joints. तो आपका जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है उसमें वो क्रिस्टल डिपॉजिट होता है, and because of that deposition of that uric acid crystals, so what happens, there is a inflammation, pain and swelling. So that is known as a gout. Remember, because of the increased uric acid formation in the body, there is a gout. How you can decrease the formation of uric acid? So by inhibiting, one of the approaches is by inhibiting this enzyme xanthine oxidase. So that's why xanthine oxidase inhibitors like allopurinol is the example of drug. Okay, so allopurinol inhibit this xanthine oxidase and will prevent the formation of uric acid and will decrease the level of uric acid in the body. तो ये गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसको कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स. प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट प्यूरिन्स मेटाबॉलिक प्रोडक्ट. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन is nothing but the uric acid that is associated with that gout. That's why. Okay, after that we have also seen what is DNA. DNA is nothing but the polymer of deoxyribonucleotide. So as you can see, deoxyribonucleotide. So for example, here we will have base, nitrogenous base, so like thymine. Okay,
So nitrogenous base with plus pentose sugar. You can see this is a pentose sugar. 1, 2, 3, 4, and this carbon is 5. Carbon number 5. Okay. At a carbon number 5, phosphate group is attached. So it is known as a 5' phosphate. And at the third carbon atom of your pentose sugar, again phosphate. Okay, again phosphate and another nucleoside. Another nucleoside is there. Two nucleosides they are joined together by phosphodiester bond. So this is the one phosphodiester bond and this is the second. ठीक है, जैसे adenine ये देखो thymine और cytosine ये दोनों कहाँ से जोड़ते हैं because of the that phosphodiester bond. So thymine and cytosine they are joined together by this phosphodiester bond and this adenine, okay, adenine and again cytosine they are also joined together by phosphodiester bond. ये adenine है और ये cytosine they are joined together by phosphodiester bond. Suppose your DNA molecule consists of 105 base pairs. Okay, if your DNA molecule consists of 105 base pairs. Okay, so in that number of phosphodiester bond will be 104. जैसे मान लीजिए 105 इसमें न्यूक्लियोटाइड्स अटैच है आपके डीएनए मॉलिक्यूल में, तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने रहेंगे 104. बिकॉज सी 3 nucleotides they will form only 2 phosphodiester bond. So you have to remember it. Okay. Now we'll see the replication of DNA. We have already explained. I have already explained you what is meant by central dogma of life. Okay. So replication of DNA or making of identical copies of your own DNA by a cell that is known as a replication, and making of RNA from the DNA that is known as a transcription. Expression of that RNA in the protein or synthesis of protein from RNA is known as a translation or protein synthesis. So out of that we will see DNA replication. So before that you should know what are the different enzymes required for DNA replication. So इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, what is the role of DNA polymerase, what is the role of DNA helicase, what is the role of DNA primase, etc. Topoisomerases, DNA ligases, what is the role of single stranded binding protein. So there is one chart, major classes of proteins and their function. Proteins means these are nothing but the enzymes. Okay, so major classes of enzyme involved in the your DNA replication. Okay, DNA replication के process में कौन से enzyme का क्या क्या role है. Okay, so now in the DNA replication you have different enzymes. So before that I would like to say in the prokaryotic cell and in the eukaryotic cell, so DNA replication is a little bit different. In the prokaryotic cell DNA replication is fully understood, but in case of eukaryotic cell it is more complicated. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, बैक्टीरियल सेल. यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या, मैमलियन सेल, जो अपना ह्यूमंस का या फिर एनिमल्स का सेल. रिमेंबर इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल you have 3 DNA polymerase enzyme. DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3. So out of that DNA polymerase 3 is responsible for the polymerization of nucleotides in the DNA. So growing chain of DNA is done by your DNA polymerase 3, and DNA polymerase 1 has a helicase like activity, and it has another role. Okay, so proteins and their function in the DNA replication. So different enzymes and their function in the DNA replication process. So first one is the DNA polymerase. So what is the role? It will cause polymerization of deoxyribonucleotide. जो incoming nucleotides होता है DNA में, जैसे complementary जो parent strand है उसके complementary strand के ऊपर addition होता है nucleotides का. So that is done by DNA polymerase, particularly DNA polymerase 3 in the prokaryotes. Okay. Again, DNA polymerase 1 has a repair or enzymatic function, and DNA polymerase 3 has a polymerization, and in addition to that it has a proofreading activity. So I will explain in the upcoming slides also. Remember, DNA polymerase will cause polymerization of nucleotides, deoxyribonucleotides. Then there is another enzyme known as a DNA helicase. So DNA helicase is responsible for the unwinding of DNA. So आपको मालूम है कि DNA आपका क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA. So double stranded, okay, twisted ladder की तरह दिखता है. So double stranded DNA. So for the replication the two strands must be separated, and that is done by DNA helicase. So DNA helicase क्या करेगा, जो दो strand होते हैं DNA के उसको separate करेगा. Now another enzyme known as a DNA primase. So what is the DNA primase? DNA primase is the enzyme produces the
primer is required for the DNA replication. कि DNA replication start होने के लिए आपको एक short fragment of RNA, जो RNA का fragment होता है इससे, ओके, तो 50 to 150 बेस पेयर का एक RNA का प्राइमर, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ RNA, और यू कैन से शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. So that is required to start the DNA synthesis, and that primer is synthesized by this enzyme DNA primase. So particularly ये enzyme कहाँ पे synthesize करता है DNA RNA primer? On the lagging strand. तो जैसे होता है आपका DNA में दो स्टैंड होते हैं, जैसे ये दो. So one is known as a leading strand, okay, and another is known as a lagging strand. And remember, DNA synthesis is continuous in the leading strand, and it is a discontinuous in the lagging strand. So this DNA primase enzyme synthesize the primer on the lagging strand. तो lagging strand पे ये primer synthesize करेगा. Now another enzyme involved in the DNA replication, that is nothing but the topoisomerase. Topoisomerases. इसके सब टाइप होते हैं topoisomerase 1, 2, 3, 4. But what is the role of this topoisomerase? So it causes nick sealing of enzyme and relieve the torsional strain resulting from helicase. तो इसका बोलता हूँ, जैसे डबल स्ट्रैंडेड DNA है तो उसको, ठीक है, so you have to open, it is a coiled structure, you have to open it. For opening purpose you need a helicase enzyme. नाउ मान लीजिए कि यहाँ पे एक एंड के ऊपर आपने होल्ड करके रखा है DNA के, और एक एंड से आप ओपन करते जा रहे हो बाय यूजिंग DNA हेलिकेज. सो व्हाट विल हैपन, एट दिस एंड देयर विल बी एक्स्ट्रा टॉर्शन. तो यहाँ पे कॉइलिंग सुपर हो जाएगा, क्योंकि एक एंड से आप खोलते जा रहे हो, एक एंड पे क्या होगा, उसको जैसे आपका रोप होता है, ट्विस्टेड रोप. सो इफ यू टाई ए रोप एट वन एंड एंड इफ यू ट्राई टू ओपन दैट रोप फ्रॉम अनदर एंड, व्हाट विल हैपन, सो whatever the twisting is there, that will be become more strain at the stationary end. So तो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि सुपर कॉइलिंग. ओके, so during the replication DNA helicase will open the DNA two strand, and due to that, so another DNA molecule will have a strain or super coiling. So this this topoisomerase, it will remove the super coiling, and it also cause the sealing of nick sealing enzyme. It is also known as nick sealing enzyme. Now another enzyme is there, DNA ligase. So this topoisomerase will not require any kind of energy. Now another enzyme is there, DNA ligase. You just understand the role of these enzymes. ठीक है, बाद में आपको पूरा DNA replication में. Now what is the role of DNA ligase? Again, nick sealing enzyme. So nicks are found between the nascent chain and Okazaki fragments. So as I have told you, DNA synthesis is continuous on the leading strand or parent strand or template strand. तो template strand के ऊपर DNA synthesis continuous होता है in the 5'3' direction. Okay, but in case of lagging strand, so DNA synthesis is discontinuous or it is a retrograde manner. So retrograde manner मतलब क्या, lagging strand जो होता है उसके ऊपर there is no enzyme in prokaryotic as well as eukaryotic cell that can catalyze or that can polymerize the ribonucleotide in the 3'5' direction. So that's why in the lagging strand you have a discontinuation manner of synthesis. So lagging strand के ऊपर छोटा छोटा एक DNA बनता है, छोटा छोटा, जैसे 200-300 बेस पेयर का DNA. So बाद में उसको ऐसे टुकड़े टुकड़े जमा होते हैं. So that short fragments or that chain of that short DNA is known as a Okazaki fragment. I will explain it. Now in the DNA ligase, it will require the energy. Then again another protein responsible for the destabilization of your DNA. Single stranded binding protein. Okay? Single stranded binding protein. It is a kind of protein that will bind to a DNA molecule, separated DNA molecule. जैसे होता है ना DNA हेलिकेज का काम भी कि टू स्टैंड को सेपरेट करना, दोनों स्टैंड को सेपरेट करना. उसके बाद में ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसको ऊपर एक स्टैंड के ऊपर बाइंड हो जाएगा जो सेपरेट है, और उसके बाद में वो स्टैंड को वैसे ही सेपरेट रखेगा. वो फिर से ज्वाइनिंग नहीं, मतलब आप फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने देगा. ओके, नाउ दिस इज नोन एज अ DNA destabilizing protein. Okay, this single stranded binding protein is known as a DNA destabilizing protein. This was question in GPAT. So now the following is known as a DNA destabilizing protein. तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इट इज नोन एज अ DNA destabilizing.
क्योंकि डीएनए का स्टेबल कैसे होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो वो स्टेबल है, उसको सिंगल मतलब अगर आपने स्ट्रैंड सेपरेट किए तो दैट इज अ डिस्टेबल, और स्ट्रैंड को सेपरेट कौन रखता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सो इट इज अ डीएनए डिस्टेबिलाइजेशन. So this DNA replication that occurs in a different steps. ये DNA replication different step में होता है. So जैसे initiation of replication, ठीक है, पहले होगा आपका क्या recognition of ORI sequence. So ऐसा नहीं कि कहाँ पे भी DNA replication चालू हो जाएगा. DNA replication start होता है ORI, okay, origin of replication. ORI means origin of replication. तो वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे repeated sequence of your base pair, जैसे 80 80 80 80 80 सब कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होगा बेस पेयर का, कहाँ पे, डीएनए मॉलिक्यूल में. ओके, सो रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ एडेनिन थाइमिन बेस पेयर, so that at that place there is a origin of sequence. Okay, so now origin of sequence is recognized, then this DNA A protein will bind to a ORI sequence. Okay, and then there is a formation of replication बबल और रेप्लिकेशन फॉर्म. ओके, आफ्टर दैट उसके ऊपर रेप्लिकेशन बबल बनेगा और उसको सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन जाके बाइंड होगा और उसके बाद में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो जस्ट ओवरव्यू, नाउ विल सी, यू कैन सी हियर. सो इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आपका डीएनए होता है. सो डीएनए ए प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ओराई सीक्वेंस, कि डीएनए का जो है डीएनए मॉलिक्यूल उसके ऊपर कहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंस है एडेनिन थाइमिन का. सो रिपीटेड सीक्वेंस कहाँ पे है उसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई रेप्लिकेशन ओराई सीक्वेंस ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सो एट दैट प्लेस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन विल रिकॉग्नाइज दैट प्लेस एंड इट विल बाइंड टू दैट प्लेस. वो जगह रिकॉग्नाइज करेगा, ढूंढेगा कौन, डीएनए ए प्रोटीन, और उसको ऊपर जाके बाइंड होगा. आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ डीएनए प्रोटीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल. ये तो ये क्या करेगा, जहाँ पे बाइंड किया वहाँ पे सेपरेशन करेगा दोनों स्ट्रैंड का. So two strand will be separated by DNA A protein. It has a somewhat activity like DNA helicase. तो ये थोड़ा सा इमीडिएटली करता है. तो बाद में फिर बाकी सब आ जाएगी, DNA हेलिकेज यहाँ पे आ जाएगा और ये बाकी का जो डबल स्टैंडर्ड है उसको कंटिन्यूसली अनवाइंडिंग करते रहेगा. देन DNA सिंथेसिस. ओके, सो आपको जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, देर आर टू स्ट्रैंड. जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन इज लीडिंग स्ट्रैंड and this one is known as a lagging strand. So leading strand is also known as a template strand, we have seen that, or parent strand or continuous strand, and lagging strand is known as a leading strand is also known as template strand or sense strand. This lagging strand is known as a non-sense strand or this discontinuous strand or complementary strand. Okay, so now on leading strand DNA synthesis is a continuous in this direction, in the 5' to 3' direction. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है. सो डीएनए पॉलीमरेज विल कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन फॉलोइंग डायरेक्शन. सो रिमेंबर डीएनए का रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5' to 3' है. सो राइट फ्रॉम 5' to 3'. नाउ यहाँ पे देखो, दिस इज अ लैगिंग स्टैंड, दिस स्टैंड इज फ्रॉम स्टैंड उसका ऐसा है 3' to 5'. ओके, सो ऐसा रेप्लिकेशन होने का नहीं, because there is no enzyme that can catalyze the polymerization of nucleotides. Okay, so there is no enzyme available in the body that can catalyze the polymerization of deoxyribonucleotide in this 3' to 5' chain. तो इसके लिए एंजाइम नहीं होता है. So that's why on the leading strand DNA synthesis is continuous and on the lagging strand DNA synthesis is in a discontinuous manner. That's why in the lagging strand it is a discontinuous and on the leading strand it is a continuous. So it is just again overview. We'll see the complete process now. First step, replication of DNA. So पहला स्टेप होता है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. सो चालू कैसे हुआ, ठीक है, किक मारे तो गाड़ी चालू होती ना वैसे. सो इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स एट अ स्पेसिफिक साइट. तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी चालू हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन. So DNA replication occurs at a specific site known as the origin of replication. So DNA में कुछ particular sequence होगा, जिसे मैंने बोला है 80 sequence, adenine thymine sequence, repeated sequence of adenine and thymine.
So at that time there is a origin of replication. At that place there is origin of replication. So DNA replication will start from the specific site known as the origin of replication. This DNA A protein, they will recognize the origin of replication and it will bind to DNA at that place. DNA A protein जो होता है आपका, वो DNA A protein क्या करेगा, DNA origin of replication को recognize करेगा DNA को कहाँ पे है. There are lot of origin of replication on the DNA. तो DNA मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है आपका और उसमें क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट DNA रेप्लिकेशन के ओरिजिन होते हैं. Origin of replication के सीक्वेंस होते हैं. So this DNA A binding protein will bind to that particular sequence and will start this double stranded DNA destabilize. तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्टेबलाइज करेगा, उसका अलग अलग, ठीक है, उसका जो चेन होता है या फिर उसका जो स्ट्रैंड्स होता है, so it will separate the strands. Okay, so DNA binding, then DNA A protein will bind to a origin of replication and will separate, will cause separation of double stranded DNA. Okay, after that what is RNA primer? So RNA primer is nothing but the for a synthesis of new DNA molecule you need a short fragment of RNA, or you can say short fragment of single stranded DNA which will act as a primer. Okay, so this primer is produced by specific enzymes known as a primase. Okay, primase or RNA polymerase, okay, enzyme primase or RNP. So it is in association with the primosome. Primosome नाम का प्रोटीन है, उसके साथ में होता है. Now a constant synthesis of primer should be occur on the lagging strand of DNA. जो lagging strand होता है वहाँ पे उसके ऊपर ये constant synthesis होता है primer का, because on the lagging strand DNA synthesis is discontinuous and in the retrograde manner or in the small pieces of polynucleotide. So for that you need a constant supply of primer. लीडिंग स्टैंड के ऊपर एक बार प्राइमर अटैच हो गया तो पूरा स्टैंड रेप्लिकेट जब तक नहीं होता तब तक वो निकलता नहीं. बट ऑन द लैगिंग स्टैंड you need a different primers. Okay, so that's why for each short replication you need a different primer. Now DNA synthesis is a semi-continuous and it is a bidirectional. Okay, so it is a bidirectional. Okay, so on the leading strand DNA synthesis is a continuous or forward, and on the lagging strand it is a discontinuous or like a retrograde. Now replication curve, formation of replication curve. Separation of these two strands of DNA or DNA to form a replication curve. It is done by DNA helicase. DNA helicase क्या करेगा? It will look like a zip opener. It will open the twisted ladder and it will convert into linear structure. Okay, so double stranded DNA को open करेगा single strand, and after that primer will bind to the parent strand and it will DNA polymerase will cause polymerization of that primer. Now single stranded binding protein, SSB, single stranded binding protein. So they will bind to a primer, okay, and it will destabilize the, okay, it will let two strands to be separated. दो जो स्ट्रैंड सेपरेट किए डीएनए हेलिकेज ने, उसके बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसको अटैच होगा, इट विल destabilize the DNA. It is known as a destabilizing protein. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. Single stranded binding protein, they are known as a destabilizing DNA destabilizing protein. Now this okay, so now जैसे हेलिकेज ने आपको सेपरेट किया है DNA, so you are getting a single stranded DNA. Now this single stranded DNA, they may form a bond with each other and they may form a double stranded DNA. Now to prevent this, there is a role of this single stranded binding protein. So they will bind to a separated strand and keep them as a single strand, keeps them as a separate. After that DNA synthesis by DNA polymerase 3. As I have told you कि प्रोकैरियोटिक सेल में DNA polymerase 1, 2 and 3 होता है. यूकैरियोटिक में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन ऐसा होता है. Prokaryotic replication is easy to understand, that's why we are taking, and it is also well established. So DNA synthesis by DNA polymerase 3. Now DNA synthesis is catalyzed by DNA polymerase 3, which occurs in the 5' to 3' direction. ये याद रखो as it is. So DNA synthesis occurs in the this direction, 3' to 5' direction, which is an anti-parallel to a template DNA strand.
Okay, okay. So it is a semi-conservative method. There are three types of replication: conservative replication, semi-conservative replication, and theta replication. यहाँ पे mention नहीं किया है लेकिन होता है. Okay. So there are three kind of replication. First one is a conservative replication. Second one is a semi-conservative replication, and third one is a theta replication. Now conservative replication में क्या होता है? Conservative replication. What happens in the conservative replication? So actually there is no separation of two DNA strand. डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें सेपरेशन होता ही नहीं कंजर्वेटिव में, तो उसमें सेपरेशन होता नहीं तो क्या होगा, तो एज इट इज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल बी कॉपीड, तो उसमें पेरेंट डीएनए अलग बनेगा और जो डॉटर डीएनए वो अलग बनेगा. सो देयर इज नो पार्ट ऑफ पेरेंट डीएनए इन द डॉटर डीएनए, बट इन केस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, in case of semi-conservative replication, so what happens, two DNA strands are separated and daughter DNA strands are daughter DNA strands are synthesized which are complementary to parent DNA. So जो बाद में जो DNA बनेंगे चार, तो उसमें एक DNA बाद में जो DNA बनेंगे दो, उसमें एक DNA में एक parent strand रहेगा, एक daughter strand रहेगा, और दूसरे DNA में भी एक parent strand रहेगा, एक daughter. So that is a half of DNA structure is conserved in the semi-conservative DNA replication. Okay, so there are three replication: conservative, semi-conservative, and theta replication. So theta replication कहाँ पे होता है? Theta replication that mostly occurs in the eukaryotic cell. So containing circular DNA. जहाँ पे circular DNA होता है, okay, जैसे plasmid type. So in that theta replication occurs. इतना याद रखो, ये अलग point है. Now DNA synthesis by DNA polymerase. तो यहाँ पे याद रखो DNA polymerase 3 will synthesize the DNA. It is known as a DNA polymerase 3. So क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. DNA polymerase 3 will catalyze the synthesis of DNA or will cause a polymerization of nucleotide bases. So DNA synthesis is catalyzed by DNA polymerase 3, which occurs in the 5' to 3' direction, which is anti-parallel to a template DNA strand. Now synthesis of DNA takes place simultaneously in the opposite direction on both strands. Okay, so this DNA polymerase will cause joining of incoming nucleotides. Incoming deoxyribonucleotides are added one after another to a 3'8 of the template RNA template. जो RNA template होता है उसका 3'8 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, जो न्यूक्लियोटाइड बेस पे रहे जिसका फॉस्फेट ग्रुप होता है. सो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करता है एंड दैट विल मेक अ बॉन्ड ओवर देयर. So that's how there is a addition of incoming deoxyribonucleotide on the growing chain of primer. So primer A, initially primer is nothing but the 10 to 15 base pairs sequence, which is a complementary to your template strand. इसके opposite में वो ही grow करेगा. Now DNA synthesis is continuous on a leading strand, but on the lagging strand क्या होता है कि lagging strand में it is a in a discontinuation. Okay, it is a discontinuous in the lagging strand, or on the lagging strand it is a retrograde. Okay? So there is a production of small DNA known as a Okazaki fragments. So small fragments of this continuously synthesized DNA are known as Okazaki fragment, and it is produced on the lagging strand, lagging strand, which are later joined together by or it is joined together by DNA polymerase 1 and DNA ligase. तो यहाँ पे DNA polymerase 1 का रोल है कि to seal the small fragment prepared on the lagging strand. Okay, so DNA polymerase का रोल ligase की तरह होता है, ligase की. Okay? So remember DNA replication is done by this enzyme DNA polymerase 3. DNA polymerase फर्स्ट का रोल क्या है, it will act as a to ligate, it will it will correctly join that Okazaki fragment like DNA ligase. This DNA polymerase has another role in addition to polymerization of deoxyribonucleic acids. तो ये DNA polymerase सिर्फ DNA synthesize नहीं करेगा, it will also has a proof reading activity, proof reading function of DNA polymerase 3. reading function मतलब क्या है कि इनकमिंग जो न्यूक्लियोटाइड है वो करेक्टली मैच हुआ है कि नहीं. जैसे एडेनिन के अगेंस्ट में क्या होता है थाइमिन, साइटोसिन के अगेंस्ट में क्या होता है
gone in. Okay, so ATGC, so adenine के सामने आना चाहिए थाइमिन आना चाहिए. So ये देखने का काम भी किसका है, polymerase 3 का. So proofreading function of DNA polymerase 3. So it will also check the incoming nucleotide. Okay, it will check whether correct incoming nucleotide is attached or not. Only correctly matched, that is a complementary pair, okay, of nucleotide will be accepted. That is known as a proofreading activity. It corrects the wrongly placed or inserted nucleotides. Now lastly ये जब हो गया polymerization, what will happen? Now replacement of that parameter जब हो गया complete आपका replication, तो उसमें क्या होगा? So you have to remove that RNA primer. So DNA polymerase 1, it will remove the RNA primer and takes its position. RNA primer जो attach हुआ है DNA replication के लिए, जब complete होने के बाद ये DNA polymerase उसको replace करेगा, ये उसके जगह पे अटैच होगा और ये 2-3 न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड करेगा और उसके बाद में दैट इज नोन एज अ स्टॉपिंग. सो डीएनए पॉलीमरेज विल कैटलाइज द डीएनए सिंथेसिस इन दिस डायरेक्शन or direction of parent DNA, and it replaces the RNA primer. Now DNA ligase catalyze the formation of phosphodiester linkage between DNA synthesized by DNA polymerase 3. Small fragment produced by DNA polymerase 1. This process, okay, this process requires energy and which is provided by breakdown of ATP. लैगिंग स्टैंड के ऊपर जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है वो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1. लैगिंग स्टैंड के ऊपर जो डिसकंटिन्यूस ओकेजाकी फ्रेगमेंट बनाता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है. डीएनए पॉलीमरेज 3 लीडिंग स्टैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है इन कंटिन्यूस मैनर. नाउ आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ दिस ओकेजाकी फ्रेगमेंट दे आर जॉइंड टुगेदर by DNA ligase and DNA polymerase 1, taking the energy in the form of ATP. Now we have seen there are three types of DNA polymerase in the prokaryotic cell. जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें तीन टाइप के होते हैं, DNA polymerase 1, 2 and 3. In the eukaryotic cell there are different DNA polymerase. Okay, so types of DNA polymerase in the eukaryotic cells. So DNA polymerase alpha, उसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर. प्राइमर यहाँ पे कौन बनाएगा आपका, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन द यूकैरियोटिक सेल. ओके, इन द प्रोकैरियोटिक सेल कौन बनता है आरएनए प्राइमर, वहाँ पे एक एंजाइम है नोन एज अ प्राइमेज. तो डीएनए ये होगा इसमें डीएनए पॉलीमरेज बीटा इन द यूकैरियोटिक. इट इन्वॉल्व्स इन द रिपेयरिंग ऑफ डीएनए. फंक्शंस आर कंपेरेबल लाइक डीएनए पॉलीमरेज 1 इन द प्रोकैरियोटिक. डीएनए पॉलीमरेज 1 का प्रोकैरियोटिक में क्या फंक्शन है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाने का और उसको बाद में सील करने का और रिपेयर भी करने का. सो लाइक दैट likewise the DNA polymerase beta in the eukaryotics all in the repair of DNA function capable for DNA function is comparable with the DNA polymerase 1 in the DNA polymerase gamma in the eukaryotic cell. So participate in the replication of mitochondrial DNA. Then DNA polymerase delta responsible for the replication on leading strand, also known as a proofreading. अभी देखो ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है it will exactly work like a DNA polymerase 3 in the prokaryotes. DNA polymerase beta जो है it will exactly work like a DNA polymerase 1 in the prokaryotic. और DNA polymerase alpha जो है in the eukaryotic cell it will exactly work like a primase enzyme DNA in the prokaryotic replication. ये यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज होता है. DNA polymerase epsilon responsible for the replication on lagging strand and proofreading function. It is a summary of your replication. Okay, again strand A strand B, जैसे ये parents जैसे ये DNA हो गया आपका double stranded DNA. So initially this DNA A protein will bind to a leading strand at a sequence at a origin of replication, and after that there is a separation of this strand, okay, partial separation, and then this there will be synthesis of RNA primer. Okay, उसके बाद में DNA हेलिकेज भी आएगा. DNA हेलिकेज अटैच होगा और it will continuously separate the DNA strand. Okay, after that a primase enzyme synthesize a primer. Primase enzyme will bind to a lagging strand and will synthesize a short fragment of primer. वो primer कहाँ पे bind होगा, वो primer. So it is a complementary primer to the leading strand, and after that यहाँ पे DNA polymerase का रोल है. DNA polymerase का क्या रोल है, so it will build up that primer. जो primer है which is a complementary to leading strand, it will
neutralize the polymerization of nucleotide. It will add the nucleotide in this direction, 5' to 3' direction on the leading strand, which is a continuous. Now on the lagging strand, DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 will form a short fragment of DNA. जैसे देखो 5' to 3' and short fragment of DNA, which is known as Okazaki fragments. In between वो single strand binding protein भी उसमें attached रहेगा. So these two strands separate. On the lagging strand, DNA synthesis is in a discontinuation manner. Strand पे retrograde होता है, discontinuous. The leading strand, there is a continuous synthesis of DNA. Okay. Now again, you can see whole process in this diagram. So आपका जो DNA है, that is wrapped in the protein known as a chromatin or chromosome. DNA. Now this DNA helicase से DNA helicase का काम क्या है? What is the role of DNA helicase? To open this structure. डबल स्टैंडर्ड DNA उसको ओपन करेगा, ओपन करते जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन करते जाएगा. उसके बाद में जो ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस पे पहले अटैच हो चुका है आपका DNA A प्रोटीन. On the lagging strand, this primase enzyme, okay, on the lagging strand, this primase enzyme will make a primer, okay, will synthesize a primer which will attach over here, okay, at this side, and then again, okay, जैसे यहाँ पे 5' है, यहाँ पे 3'. On the 3' on the 5' to 3' direction there will be synthesis of complementary strand with the in conjunction with the primer. Lagging strand, there is a synthesis of small fragments of DNA which are then so that they are joined together by DNA ligase enzyme. इसमें continuous जो base pairs होता है, जैसे आपका okay, ATP, DTTP, DCTP, DGTP, D-adenine monophosphate, D-thymine monophosphate, D-cytosine monophosphate and D-guanine monophosphate. ऐसे 4 बेस पेयर आपको यहाँ पे लगेगी रिएक्शन में. That's the DNA replication. Actually, in the GPAT session, they don't explain you DNA replication. यहाँ पे कुछ explain करने क्या नहीं होता है GPAT lecture. I used to take basic as well as some. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा? What is the role of single strand binding protein? What is the role of DNA polymerase 3? What is the role of DNA polymerase 1? Okay. So on which strand there is a discontinuous synthesis of small fragment of DNA? Lagging strand. इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. DNA synthesis or DNA replication is a very precise process. It is a very precise process to preserve your progeny, to preserve your DNA, to preserve your genetic information. Replication क्यों होता है? जब सेल मल्टीप्लाई होता है, so one cell to another. So if your bodies want to form a identical cells, then only there is a DNA replication. And whole replication process that can be completed in the 8 hours. एक 8 hours के टाइम स्पेन में आपका पूरा DNA replication process complete हो जाता है. Because DNA is synthesized continuously on leading as well as lagging strand in opposite direction. दोनों स्टैंड के ऊपर एक ही टाइम पे DNA synthesis होता है. So that's why whole DNA synthesis that can be completed in the 8 to 9 hours. That's it. एक 8 या 9 घंटे में पूरा DNA synthesis होता है. It is a very precise method. DNA is copied by very precisely. DNA is copied by precisely. मतलब जो भी DNA का replication होता है वो सब चेक होता है, हेडिंग होता है ना उसका DNA polymerase 3 का. So but due to external reason, due to external problems, so what will happen? DNA में कुछ चेंजेस आ गए, जैसे मान लीजिए कि एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया, या फिर एक बेस अल्टर हो गया, या फिर वहाँ पे कुछ मिथाइलेशन हो गया. If there is a methylation on the base, nitrogenous base, so any alteration or any change in the DNA structure, any change in the DNA structure is known as a mutation. Any change in the DNA structure is known as a mutation. Different kind of mutation. There are basically two types. One is a point mutation and second one is a frame shift mutation. Point mutation you have again transitions and transversions. Mutation मतलब एक ही जगह पे. Frame shift mutation मतलब पूरा एक सीक्वेंस ही बदल जाता है. Mutation मतलब transition मतलब ये देखो, जैसे replacement of purine by pyrimidine, replacement of pyrimidine by purine. इनका replacement होगा थाइमिन से
या फिर थायमिन का रिप्लेसमेंट होगा एडेनिन से, इट इज नोन एज ट्रांजिशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एडेनिन थायमिन दोनों का रिप्लेस होगा, दोनों का रिप्लेसमेंट होगा दोनों से, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन दैट यू हैव साइलेंट म्यूटेशन, missense mutation and nonsense mutation. So actually it is a part of your molecular biology, it is a part of your biotechnology. So इसके डीप में नहीं जाना, नहीं गए तो भी कोई दिक्कत। We are going to see again it major types of DNA damages. Major types of DNA. So DNA replication is very precisely done with all the modalities. DNA replication जो है वो precisely DNA का synthesis होता है, but there are the external reasons, जैसे UV light हो गया आपका, या फिर एक्सरे लाइट हो गया, ओके। सो फ्री रेडिकल्स दे कॉजेज द मिथाइलेशन, दे कॉजेज द कैंसर एंड ऑल दैट, ओके। सो देयर आर टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। सो फर्स्ट वन इज सिंगल बेस अल्टरेशन, जैसे सिंगल बेस जैसे प्यूरिन पिरिमिडिन होता है, तो डी अमाइनेशन, डी प्यूरिनेशन और बेस अल्काइलेशन और इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस एनालॉग, दैट इज नोन एज सिंगल अल्टरेशन, सिंगल बेस अल्टरेशन। तो एक ही जो बेस है उसको अल्टर हो जाएगा ड्यू टू डीअमाइनेशन, डीप्यूरिनेशन या फिर अल्काइलेशन या फिर इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस एनालॉग, उसमें भी सिंगल बेस अल्टर हो जाएगा। टू बेस अल्टरेशन, टू बेस अल्टरेशन, यूवी लाइट क्या करता है, यूवी लाइट इट विल कॉजेज, इट विल इंड्यूस द pyrimidine dimer alteration, UV light induced pyrimidine dimer alteration, pyrimidine का dimer बना है। Actually I have told you it is not much important, but at least आपको ये मालूम होना चाहिए कि what is single point mutation, कभी भी क्वेश्चन आता है। And chain break, oxidative free radical that can break the chain, ionizing radiation also break the chain of DNA. Now cross linkage, cross linking between bases of same और opposite strand, तो सेम स्टैंड का बेसिस है उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा, या फिर अपोजिट स्टैंड का बेस है उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा। सो आइडियली क्या होता है कि एडेनिन फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन, बट अगर एडेनिन के ही बीच में अगर बॉन्ड होगा तो दैट इज नोन एज क्रॉस लिंकेज, क्रॉस लिंकेज इन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड और प्रोटीन। सो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अगेन यू कैन चेक, म्यूटेशन इज नथिंग बट द it is a change in the DNA structure or gene region, that anything or any chemical that will make the change in the DNA, that is known as a mutagen. Mutagen. Now point mutation. So mutations in the DNA. Point mutation. Replacement of one base pair with another base known as a point mutation. These are of two types. जैसे पहले हो चुका है. Transitions. In this case, purine or pyrimidine. This case purine or pyrimidine is replaced by another, एक में के रिप्लेस करेंगे, प्यूरिन का pyrimidine से रिप्लेस होगा या फिर pyrimidine का purine से रिप्लेस होगा, there is another transition. Now transversion, replacement of purine and pyrimidine both at a time and vice versa, ट्रांसवर्शन। now इसके पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद में क्या होगा, consequences of point mutation, तो इसमें साइलेंट म्यूटेशन एक आता है। So the codon on mRNA containing charged base may code same amino acid, ठीक है। तो mRNA के ऊपर जो कोडन होता है 3 कोडन, तो उसमें एक बेस के लिए कोड करता है, so that may code for same amino acid. So charged base may changed base, sorry charge नहीं है, changed base may code for same amino acid, so बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया, for example UCA, it will code for A1 amino acid known as serine. So alteration in this code UCA, for example UCU, एक ही जगह U ऐसे लगा है, so it will again code serine amino acid and it is not detected, क्योंकि amino acid तो सेम ही कोड रहा है, लेकिन वहाँ पे डैमेज हो चुका है, वहाँ पे एडेनिन की जगह यूरेसिल आ चुका है, so okay UCA की जगह UCU बन गया, so there is no difference in the coding of amino acid, but there is a change, so known as silent mutation, and it is not detected, okay, it is not detected, that's why known as silent mutation. Again there is one more कि related disease भी होते हैं silent mutation के disease, another is the missense mutation, so change the base may code for different amino acid, एक सिंगल बेस चेंज हुआ है,
जैसे मान लीजिए UCA कोड फॉर सेरीन, सो एंड इफ देर इज अल्टरेशन ACA, U की जगह A आ गया पहले इसमें, इट विल कोड फॉर 318. So classical example of this type of mutation is nothing but sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a genetic disease due to alteration in the single code. The frameshift mutation is when one or more base pairs inserted or deleted from the DNA, causing insertion or deletion mutation respect. Then nonsense mutation means because of altered base may become a termination codon. ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन किसको बोलेंगे? अगर कोई बेस मतलब कोई कोडन है, उसको एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, but if that is replaced by if there is alteration in the base then and it become UCA code for serine, तो उसमें alteration हो गया UAA बन गया, तो UAA is nothing but a termination code, that is known as nonsense mutation. Okay, these are the types of mutations. Okay, so remaining part we will take tomorrow. समझ में आया ये? Tomorrow we will see transcription.